considered as they are deserving. Thank you, sir. Okay. Thank you so much, sir. Total how many demands? Sir, khatam ho gaya? Yeah, please. Sir, I rise to speak on the current railway budget. Indian Railways is the second largest transport in Asia. There are 13,453 passenger trains carrying 2.3 crore passengers and 9,141 freight trains carrying 30 lakh tons of goods plying through, 7,349 stations daily, it is as per the government statistics. Such a huge system working in the country may be called as the lifeline of India. But, sir, it is a matter of great regret that the fare of railway tickets have increased at every budgetary proposal of the present government. To travel in trains like Rajdhani Express or Duronto Express, it has become out of reach for the common people, which back in the past was much easily purchased at the time when our present Honorable Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, was the Railway Minister of India. Yes. That was actually the glorious era of railways. It was a feeling that the railways function together like a railway family. So my question is to the Honorable Minister that, sir, can you say that what is the number of solar power conducted railway trains operating in our country? On July 14, 2017, India's first solar power vehicle was operating at Safdarjung Railway Station, New Delhi. Solar power train can save us from the huge pollution and from all the thick black smoke that we get from diesel engines. So my proposal to the Railway Minister is that main thrust is to be given on modernization and the safety of passengers. New bullet trains corridors were assured. But, sir, what is the result? Is bullet train that we see in Japan possible to run in our country? Because our soil is not fit for such type of trains to operate. It was, sir. So basically, sir, the current government is misguiding the nation. First-speed trains are being attempted to mark as bullet trains. Names of 7 corridors have been sanctioned, but no budgetary support has been allotted. Why is the nation being bluffed? You have already sold Air India. When is the Shubh Muhurat when you are going to sell Indian Railways? We also need to know that. Proposals for PPP models have already started, which is the beginning of this ultimate purpose. We need to increase the railway connectivity in bigger way with coal connectivity and port connectivity projects. So, sir, please tell us in your reply that what is your future plan to run the Indian Railways? Or is there a plan to sell it part by part to the private parties? I had already in this House mentioned that this government is in a mood to sell all the public sectors, even if they are profit-making sectors. So I hope that the Indian Railways do not have the same kind of fate, which we are apprehending. Reform railways to make it more efficient, greener, and modern, which will translate into cheaper, safer, assured mode of transport for our common man. The trains are not running on time. There's a huge delay, which is causing trouble to the common passengers. Cleanliness of the toilet is very, very important. These are very small things. But in how many trains bio toilets have been set up by the railway compartments? I would also request my other fellow MP colleagues that with your sufficient money that we get from the MP funds, why can't we allot the same a small amount of money to increase the seating arrangements in our respective constituencies? Here in Bengal, we MPs, we do that. I have done that. A lot of people have done that. These are very small matters, but matters of importance. Thus, sir, I would end with few other questions. How many proposals proposed at
National Railway Plan have been implemented. And I allege that West Bengal has been deprived in this railway budget. Please try to implement all the proposals which were proposed by the then Honorable Railway Minister, Mamata Banerjee, standing on the floor of this House. And last but not the least, I want to ask that how far it is true that 1 lakh Group D, including gangman, more than 30,000 Group C vacancies exist or they don't? If so, then when will the vacancies be filled? Because in our country, the hungry, unemployed youth are actually fighting. Yes, sir. I mean, that expression is lovely, but they are actually fighting. There is no employment here. We are struggling. And it is not me saying, the research says so. So, with so much hunger in this country, what is your government doing about it? And coming back, humbly I would say that we are all in favor of the railways, and we want to see that it is being run smoothly, with comfort, with thinking of security for the people and for the passengers, at tolerable costs, so that everybody can avail. Thus, myself and my party does not support this budget. Thank you, sir. Thank you. Shri Arun Sarji. शर्म की बात है, ये शर्म की बात है अध्यक्ष जी। विश्वास करना चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हम कब तक विश्वास करते रहेंगे अध्यक्ष जी कि हमारा कुछ नहीं है। अध्यक्ष जी, वैकेंसी और रिक्रूटमेंट पे बहुत बात आई। अध्यक्ष जी, 2009 से 14 में 2,42,709 अपॉइंटमेंट्स रेलवे ने दिए थे। 14 के बाद में मोदी जी ने आके अब तक 3,44,646 अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी दे दिए, प्लस 1,40,713 का रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। कई सदस्य कल बोल रहे थे कि रिक्रूटमेंट पे बैन है। कोई रिक्रूटमेंट पे बैन की बात नहीं है, रिक्रूटमेंट ऑलरेडी चल रहा है। थोड़ा सा होमवर्क करके आए, सदन की गरिमा की बात है। कोई बैन नहीं, ऑलरेडी रिक्रूटमेंट चल रहा है। मैंने बताया अध्यक्ष जी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के साथ हुई, हमने एकदम संवेदनशीलता के साथ छात्रों के साथ संवाद किया, छात्रों की प्रॉब्लम को समझा और उसका समाधान किया। अध्यक्ष जी, उसका समाधान किया। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य, मैं आपको अंतिम बार कह रहा हूं, आप हर बार बीच में बोलते हैं। आपकी पार्टी को जितना था उससे ज्यादा मौका दे दिया है। बीच में बोलने से आप स्कोर करने की कोशिश नहीं करें। प्लीज नो। माननीय मंत्री जी, आप अध्यक्ष जी, मंत्री जी आप। हाँ जी अध्यक्ष जी, इसके अलावा जितने भी विषय मान्यवर सदस्यों ने रखे हैं, मैं किसी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पे इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि बहुत इसमें समय भी लगेगा और हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर डिटेल डिस्कशन करने की जरूरत है। जब तक डिटेल डिस्कशन नहीं हो तब तक आप हमारा मत समझे, हम आपका मत समझे, उसके लिए एक चर्चा की जरूरत रहती है। तो मैं निवेदन करूंगा, सभी सदस्यों के पॉइंट्स इसमें रखे गए, एक साथ टीम ने कंपाइल किया है। हाँ, मैं प्राइवेटाइजेशन की बात करता हूँ अध्यक्ष जी, मैं प्राइवेटाइजेशन की बात करता हूँ। एक मुद्दा जो कई सदस्यों ने उठाया अध्यक्ष जी, ये एकदम प्योर हाइपोथेटिकल पॉइंट है सदस्यों की तरफ से जिन्होंने उठाया है। मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी, ट्रैक किसका है? ट्रैक भारतीय रेलवे का है। पटरी किसकी है? रेलवे की है। स्टेशन किसका है? रेलवे का है। ऊपर के जो बिजली के तार है वो किसके हैं? रेलवे के हैं। इंजन किसका है? रेलवे का है। ट्रेन की जो कोचेज है वो किसकी है? रेलवे की है। सिग्नलिंग सिस्टम किसका है? रेलवे का है। कहां प्राइवेटाइजेशन की बात है अध्यक्ष जी? कहीं कोई प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं। मेरे पूर्ववर्ती माननीय मंत्री श्री पीयूष जी गोयल ने सदन के फ्लोर पे क्लियरली कहा था
कि रेलवे एक ऐसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कहीं पर भी प्राइवेटाइजेशन की कोई बात ही नहीं है। कोई प्राइवेटाइजेशन की, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं है अध्यक्ष जी, एकदम स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है, ये एकदम स्पष्ट है। कुछ मान्यवर सदस्यों ने कहा कि फ्रेट ट्रेन को प्राइवेटाइज किया जा रहा, बिल्कुल नहीं है। कोई फ्रेट ट्रेन को प्राइवेटाइजेशन का कोई प्लान नहीं है। और अध्यक्ष जी, प्राइवेटाइजेशन के बारे में बहुत स्पष्ट भारत सरकार की जो नीति है उसमें क्लियरली रेलवे को लिखा गया है कि रेलवे एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, उस स्ट्रैटेजिक सेक्टर की सोशल ऑब्लिगेशंस है, उस सोशल ऑब्लिगेशंस और कमर्शियल वायबिलिटी को देखते हुए इसके प्राइवेटाइजेशन की कहीं पर कोई चर्चा नहीं है।